नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारा विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। सबसे पहले नजर डालते हैं संसद में आज हुई कार्यवाही की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए बजट। चर्चा के बाद निचले सदन से प्रस्ताव पारित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का लोकसभा में बयान। युद्धग्रस्त यूक्रेन से स्वदेश लौटे छात्रों की शिक्षा पर सरकार देगी ध्यान। यूक्रेन से करीब 20,000 मेडिकल छात्रों की हुई है सुरक्षित वापसी। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने यूक्रेन से छात्रों को निकाले जाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। सदन के कई सदस्यों ने छात्रों के भविष्य को लेकर व्यक्त की चिंता। मंगलवार को इस विषय पर विस्तार से होगी चर्चा। और राज्यसभा में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास संबंधित मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा। विभिन्न दलों के सदस्य चर्चा में हुए शामिल। और सदन दिन भर में आज पहले खबर लोकसभा में आज हुई कार्यवाही से। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट और अनुदान की अनुपूरक मांगों को पेश किया। सदन ने जम्मू कश्मीर के बजट को चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इस चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बजट पर संसद में चर्चा क्यों की जा रही है, जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इस तरह की चर्चा नहीं की गई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि अगस्त 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में विकास कई गुना बढ़ गया है। साथ ही उन्होंने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की भी सराहना की। अगस्त 2019 में जब धारा 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो पहले 4 महीने में ही जो ह्यूमन राइट्स इन जे.एंड.के करके एक संगठन है, उसके हिसाब से बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ है। और अगर जम्मू कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स के आंकड़ों को आप संज्ञान में ले, पहले 120 दिन में 17,877 करोड़ का नुकसान हुआ है। और सबसे ज्यादा नुकसान पर्यटन और हैंडीक्राफ्ट्स, जो बेसिक इंडस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर की, टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि विशेष तौर पर जम्मू और कश्मीर में अलग अलग मापदंड जो थे वो अपनाए जाते थे। जम्मू प्रोविंस जो है उसके साथ भेदभाव होता था, और कभी भी अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो उसे लेने के लिए जम्मू प्रोविंस के लोगों को धरने प्रदर्शन एजिटेशन करना पड़ती थी। उसके बाद मिले ना मिले वो भी कोई पक्का नहीं होता था। लेकिन आज जम्मू कश्मीर का पूर्ण विकास हो रहा है और सामान्य विकास हो रहा है, और बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। और विशेष तौर पर अगर मैं कहूं कि जब से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर के बाग खुल गए हैं। चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय ने जम्मू कश्मीर के बजट को सदन में लाने को ही गलत ठहराया और कहा कि इससे वहां के नागरिक अधिकारों का हनन होगा। वहीं अनंतनाग से सांसद हसनैन मसूदी ने कहा कि ये खुद में एक सवालिया निशान है कि जम्मू कश्मीर का बजट जम्मू कश्मीर की विधानसभा की बजाय लोकसभा में पेश किया गया है। The finance minister in a speech has mentioned the concept of one nation, one constitution and one flag has been adopted in the union. This was Shama Prasad Mukherjee's slogan. Ek nishan, ek vidhan. He was a good man, died unfortunately in Kashmir. But his slogan is being implemented by his successors. Presently, Srimati Nirmala Sitaraman. What is, you have read a budget. What is the meaning
of this budget being read in Parliament? Why could not Jammu and Kashmir's elected representatives, their finance minister, give this budget? क्या कहीं ये सुना गया है कि एक डिलिमिटेशन में तजवीज़ हो कि एक रीजन का हिस्सा दूसरे रीजन के साथ मिलाया जाए, साउथ कश्मीर को पुंछ के साथ मिलाया जाए? अब चलिए वो अलग बात है, वो तो एक तजवीज़ है जिस पर बहस होनी है, और मुझे उम्मीद है कि वो कमीशन खुद ही, क्योंकि उनके जो सरबराह हैं वो खुद ही इस बात का जायज़ा लेंगे क्या उनके लिए मुनासिब है कि वो कोई हतमी फैसला दे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है। अब जनाब एक कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट लॉ को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब आज की जो बजट की बात है, आपने रूल 205 सस्पेंड किया। 205 का तकाजा यह है कि जिस दिन आप बजट पेश करेंगे उसी दिन उस बजट पर बहस नहीं होगी। वहीं केरल से सांसद ईटी मोहम्मद बशीर ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 के खत्म होने के पहले और बाद में जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में कोई अंतर नहीं हुआ है। उन्होंने इंटरनेट और संचार बंद होने और घाटी में पत्रकारों की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। वहीं तेलंगाना से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया कि आखिरकार सरकार की कश्मीर के लिए पॉलिसी है क्या? Accreditation of the press, that also has been cancelled without any reason. My intention is not to question the government or blame the government, but you must have a thinking about this. In a democracy like ours, we claim that ours is the biggest democracy in the world, but these kind of things are going on in Kashmir, sir. Internet, it was suspended for months together. Communication was cut off. Press is mustn't like anything. This kind of thing should not be allowed to continue. That is why I am saying that this abnormal situation was created by the government. फार्मा ट्रेडर्स पर दावे हो गए, रेट पड़ गया। जो सप्लायर्स है उन पर रेट पड़ गया। टोल पोस्ट खत्म कर दिया आपने। 114 राइस मिल बंद करने के दहाने पर आ गए। इसका जवाब नहीं है सही है गलत है। अच्छा सर, फिर आप देखिए कि एक और बात मैं आपके गोशे गुजार करना चाह रहा हूं कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस आप इतना कर दे रहे कश्मीरियों के ऊपर। यानी आप कल ये बताएंगे, मैं खत्म कर रहा हूं सर, कल आप ये बताएंगे कि नहीं हमने तो इतना पैसा दिया था। सर कि आप ये इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है आपकी? और अनएम्प्लॉयमेंट कितना है सर कश्मीर में आज? अनएम्प्लॉयमेंट सर आज कश्मीर में 7.2% है। ऑल इंडिया पूरे भारत में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद 890 केंद्रीय कानून अब जम्मू कश्मीर में लागू हो गए हैं। अनुच्छेद 370 हटाना समय की मांग थी और हमें इस बात पर गर्व है कि हमारी सरकार ने यह साहसिक कदम उठाया। It was a nara, it was a slogan with a lot of feeling. This country cannot have two symbols, two prime ministers and two constitution. When we have a constitution which we respect, we revere, and every time we know the kind of people who have given that constitution to us. And we all respectfully raise the name of Dr. Ambedkar. So if Dr. Ambedkar's given constitution is so valuable for the rest of the country, it's not valuable to J&K. And there are several members who ask us the question. But not a voice was raised. Hooray, why not Article 370, which is not allowing us to take Dr. Ambedkar ji given constitution to J&K? Why are we not being allowed to take? वो आवाज कभी सुनने में नहीं आया। अभी हटने के बाद पूछ रहे हैं क्यों हटाना था क्या? चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों, जिसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में किसी तरह का बदलाव नहीं आया है, के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस दौरान रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गई। रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर में आए। अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022 तक 50,33,966 पर्यटक जम्मू और कश्मीर में भ्रमण के लिए आए हैं। I would like to say, sir, the highest ever tourist footfall of 50 lakhs, 33,966 is recorded
that many number of tourists visited J&K in October 2021 to January 2022. So just before the onset of that Chillan Kalan, as you call in J&K, between October and January 2022, this is the number, 50,33,966 are the tourists who have reached J&K. During December 2021 alone, and I'm talking of Valley specifically, not Jammu, they could be pilgrim tourists. No, just the Valley. 1.43 lakh tourists visited the Valley alone. And that's the highest in last 7 years. So that wouldn't have been possible if the environment was not conducive, and therefore the impact on hotel occupation and also the tourist operators and everything else is there for all of us to see. वहीं आतंकी घटनाओं पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कुछ सदस्यों ने कहा है कि अनुच्छेद 370 हटने से आतंकी घटनाओं पर किसी तरह की कोई कमी नहीं आई, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि आतंकी घटनाओं में काफी कमी आई है। 2021 में जहां आतंकी घटनाओं की संख्या 229 थी, वहीं ये संख्या 2020 में 244 हुई। जहां शहीद सैनिकों की संख्या 2020 में 63 थी, वहीं 2021 में 43 सैनिक शहीद हुए हैं। Terrorism is still on. There is no difference. That is why you're clamping down. I want to give them a true picture, sir. 229 incidents were reported in the year 2021 as against 244 in 2020. There's a 33% drop in the number of police and security personnel martyred from 63 in 2020 and 42 in 2021. So there is a 32% decline in terrorist recruitments. In 2021, sir, 112 youth joined terrorist ranks as against 164 in 2020. Out of those 112 newly recruited terrorists, 72 are eliminated and 22 arrested within a very short span. So containing terrorist recruitment, and if they are already recruited and they are active, arresting them and eliminating them has also been the highest now. लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन सामान्य कामकाज हुआ। प्रश्नकाल के दौरान कॉरपोरेट कार्य, संस्कृति, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास, शिक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, वित्त, श्रम और रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता, पर्यटन और जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछे गए। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान वाईएसआरसीपी के मिथुन रेड्डी, कांग्रेस के राजमोहन उन्नीथन, अब्दुल खालिक और कुछ अन्य सदस्यों ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों का विषय लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उठाया। मिथुन रेड्डी ने कहा कि यूक्रेन से लौटे बहुत सारे छात्र सामान्य परिवारों के हैं, जिन्हें देश के मेडिकल कॉलेजों में समाहित किया जाना चाहिए। सदस्यों ने मेडिकल की पढ़ाई की फीस को कम करने और नए मेडिकल कॉलेज बनाने की भी मांग रखी। Thousands of students from Andhra Pradesh who've been pursuing their medical education in Ukraine. They have been evacuated from Ukraine. Not only Andhra Pradesh, throughout the country, thousands of students have been brought back, and their future is very uncertain. So we don't know when things will come back to normalcy. And most of them are poor students, sir. Their parents have put their lifetime earnings into this. So through yourself, I demand the government, these students may be relocated in the Indian colleges, sir. The majority of students who have returned from Ukraine, their families are starring the significant debits, and by taking note the situation, that is an act of war, which neither the student nor their families could foresee and is absolutely unexpected. By taking this fact into consideration, their education loan must be waived. The students who have faced emotional trauma must be provided with a specialized care to help them overcome the terrifying experience. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के न्योते पर 13 सदस्यीय ऑस्ट्रियाई संसदीय दल भारत के दौरे पर है। आज ऑस्ट्रियाई संसदीय दल ने संसद का दौरा किया और दोनों सदनों की कार्यवाही देखी। इस दल का नेतृत्व ऑस्ट्रिया की राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष वुल्फगैंग सोबोत्का कर रहे हैं।
संसदीय दल के लोकसभा में आने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को इसकी जानकारी दी। संसदीय शिष्टमंडल रविवार 13 मार्च 2022 को भारत पहुंचा। उसी दिन उन्होंने आगरा का भ्रमण किया। गुरुवार 17 मार्च 2022 को भारत से प्रस्थान करने से पहले वे हैदराबाद की यात्रा भी करेंगे। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। हम उनके माध्यम से ऑस्ट्रिया की राष्ट्रीय परिषद, संघीय परिषद, सरकार और ऑस्ट्रिया की मैत्रीपूर्ण जनता को अपनी ओर से तथा सभा की ओर से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सदन के 3 पूर्व सदस्यों एस सिंगरा वादिवेल, HB पाटिल और हेमानंद विश्वास के निधन की जानकारी सदन को दी। सदन ने कुछ पल मौन रखकर दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। वहीं सदन दिन भर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले कार्य दिवस पर आज राज्यसभा में जुड़ी कार्यवाही की खबरें। What is India's perspective on global issues? How is India navigating its bilateral and multilateral relations? How do we decode foreign policy? And what is the impact India is having on the world? For an in-depth analysis of international affairs, watch Diplomatic Dispatch with me, Vikas Baru, only on Sansad TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सदन दिन भर में अब खबरें राज्यसभा में हुई आज की कार्यवाही से जुड़ी हुई। उच्च सदन के 256वें सत्र के दूसरे भाग के पहले दिन सभापति वेंकैया नायडू ने बजट सत्र के पहले भाग की उत्पादकता का जिक्र किया और सदस्यों से उम्मीद की कि बजट सत्र के दूसरे भाग में भी सदन का काम सुचारू रहेगा। You may recall the first part of this session that had 10 sittings marked a refreshing break from the turbulences of some previous sessions. There were no forced adjournments of the House during this first part. As a result, the productivity of the House was 101.40%. The last 8 full sittings of the first part of the session were free of disruptions and forced adjournments for the first time in the last 3 years. I appeal to the members to sustain this positive spirit during the 19 sittings of this part of session so that the House clerks' productivity higher than 94% of the budget session of last year. सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज सदन को बताया कि राज्यसभा के 8 संसदीय पैनल ने कुल 21 बैठकें की हैं और 32 विभागों सहित 18 मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच की है। 8 department-related standing committees of Rajya Sabha have held a total of 21 meetings for a total duration of 73 hours, 33 minutes, and examined the demands for grants of 18 ministries comprising 32 departments. I am happy to share with all of you that the average duration of these 21 meetings was 3 hours and 30 minutes per meeting, which is the best in this regard so far. This marked an increase of 1 hour 17 minutes per meeting, a rise of 56% over that of last year. I am glad to note that 3 committees met for an average duration of more than 4 hours for the meeting. The Committee on Education reported the highest average duration of 4 hours 48 minutes per meeting, followed by one on personal and public grievances with 4 hours 39 minutes, and the Committee on Commerce with 4 hours 8 minutes. However, there has been a decline in the average attendance of meetings this year from that of last year. इसके साथ ही राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने भारतीय छात्रों के साथ साथ अन्य राष्ट्रीयताओं वाले कुछ छात्रों को युद्ध क्षेत्र से निकालने के लिए जिस तरह से प्रयास किए हैं वो सराहनीय है। इस मुद्दे पर कई सदस्यों ने यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय मेडिकल छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता जताई। You are all aware the situation in Ukraine. A large number of Indian students were required to be evacuated in the context of this situation there. This was a very challenging task. The government of India rose to and also the state governments rose to the occasion in evacuating Indian students as well as some students of other nationalities. These efforts are praiseworthy. Sir, evacuated students are mainly pursuing their medicine from Ukraine. Now, sir, though the safety and security of the students have been ensured, their future is at stake now. So the war between Russia and Ukraine is not likely to come end in a near future. Therefore, I urge the government to take necessary steps after consulting with the stakeholders and also including National Medical Commission. The students who have returned from the Ukraine due to the war are in a very, very difficult situation. Their entire family is also having most concern about their future, sir. Therefore, what is going to be done to the students is a great concern in the country now. Right. The education of that student has been now standstill. What is going to be done by the government? Government has to clarify it because they have to give a relief on that matter. Suggestions made by Honorable Chief Minister that you increase the seats by 2 to 5% in all the private and government medical colleges and also take care of the 5th year which has the clinical component in some ingenious method so that their entire education is not. इसके साथ ही राज्यसभा में आज पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए गठित मंत्रालय के कार्य पर चर्चा हुई। तमाम दलों के सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। संक्षेप में सुनते हैं कि इस मुद्दे पर सदस्यों ने क्या कुछ कहा। 1,495 number of projects have been sanctioned to these 8 states, and out of that 604 projects, nearly slightly below than the half, 604 projects are still undergoing, and most of the projects are, it is from 2010, 2011 to till date. Every member who goes there see the change. I'm not telling you that that the present government has only done it, but present government has done it in a more speedier manner, implemented the projects more and more in a speedier manner. Sikkim is one of the northeastern states. It has received unique distinction of 100% organic farming state. It has become proud of our country. The trend has to be promoted in the entire northeastern region. You should tell the Infosys and the Wipros and the TCSs of our country that go and set up one BPO there. We'll give the boys and girls of Northeast a chance to work there. That, I think, will be the true development and integration of the Northeast with the rest of the country. पहला कंडीशन है कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। इसलिए उन्होंने हर प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने का, कम्युनिकेशन बढ़ाने का काम किया, और इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का किसी भी प्रांत पर आप आराम से जा सकते हैं। When I was in Sikkim, I have seen that by natural agricultural practice, they are organic. They don't use chemical fertilizers. They were the first state in the country which had banned plastic from their entire state. Now, in the craze for taking development at a very fast pace, let us remember that Northeast's basic contribution to the society is its diversity, biodiversity, biological diversity, cultural diversity, and all this should not be lost sight of. राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र और लोकहित से जुड़े कई मुद्दे उठाए। गुजरात से कांग्रेस पार्टी के सदस्य डॉक्टर अमी याज्ञनिक ने सड़कों की सफाई और प्रदूषण से जुड़ा मुद्दा उठाया। Children, the senior citizens get respiratory infections, so there should be some kind of a method, sir. And I urge the Honorable Environment Minister, also the Minister of Education, that there should be a top-down and a bottom-up policy. Sir, just picking up the broom and collecting garbage somewhere, but what happens to those heaps of garbage is not known to us. So under this mission or under whatever laws, sir,
There are ample laws, but implementation of these laws, or whether the local agencies are held responsible, are penalized for not seeing that the roads are clean, the litter is not picked up, or it is incinerated or treated, I think we are putting our children, our senior citizens and our citizens, exposing them to health hazards. Sir, this pollution has to stop and this civic sense has to be inculcated. वहीं एनसीपी के सदस्य फौजिया खान ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से जुड़ा मुद्दा उठाया। With a market size of rupees 3.7 lakh crore for the financing of EVs in 2030, barriers like insufficient charging infrastructure, the current high pricing of EVs, limited options and higher dependency on imports hinder our path towards becoming a green economy. Given that there have been positive developments to increase the uptake of electric vehicles in numerous states, it is high time that we fuel this zeal further by infusing the requisite capital in the production. Hence, sir, I urge the Ministry of Power to consider speeding up the reforms on the above-mentioned challenges to accelerate progress. वहीं राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि भारत में उड्डयन क्षेत्र प्रतिदिन यातायात के मामले में कोविड से पूर्व वाली स्थिति के करीब है। उन्होंने सदन को यह भी आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बनेंगे। I request the Honorable Minister, rescheduling has to be done for the interest of the passengers after COVID-19 so that the economic position of the country definitely will improve. Both the domestic sector, we have brought it back to 100% capacity on the 18th of October. Even through the third wave of COVID, we did not restrict capacity. So all airlines were free to operate at 100% capacity. And similarly on the international sector, by the order issued last week, we have said that by the summer schedule, which starts on the 27th of March, international sector can also operate at 100% capacity. इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान उठे सवालों के जवाब में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने सदन को बताया कि सरकार रूस यूक्रेन की मौजूदा शत्रुता के संदर्भ में ईंधन खरीद के लिए वैकल्पिक बाजार की तलाश कर रही है। डीजल को पेट्रोल के साथ आपने दाम कर दिए हैं। डीजल आज तक कम ही रहता था, जिससे किसान और आम आदमी को फायदा होता था। तो डीजल का शुल्क और कम करने के लिए सरकार तैयार है या नहीं? 9 स्टेट्स, महाराष्ट्र ने नहीं किया, केरला ने नहीं किया और स्टेट्स ने नहीं किया। देखिए, the taxation is only one aspect of it. At the end of the day, we have to provide relief to the consumer at the point of consumption, and a number of steps have been taken. संसद के उच्च सदन में आज 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। सदन ने नवीन चंद्र बुरागोहेन, राहुल बजाज, डीपी चट्टोपाध्याय, यदलापति वेंकट राव को याद किया। सदन ने कुछ देर मौन रहकर दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। We deeply mourn the passing away of Sri Naveen Chandra Burgoyne, Sri Rahul Bajaj, Professor D.P. Chattopadhyay ji, and Sri Yadlapati Venkata Rao. I request members to raise in their place and observe a silence as a mark of respect to the memory of the departed. और सदन दिन भर में आज फिलहाल इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।